Vande Mataram, Jai Hind friends. In last lecture, we tried to understand the right of the consumer. Okay, now we will going to understand the duties of consumer, because we are Indian, no? So we have the tendency, we are very right conscious people, but we are not duty conscious. So what are our duty as a consumer? Let's try to talk about it. And after that, what facilities are given by government to the consumer to protect his rights? Okay, what kinds of tribunal facilities given by the government, that we will try to understand. And last, which brands are there which we have to use? Okay, so there may be chances that we will not cheat by the trader. That all things we will try to understand here. So let's start with the duties of consumer. As the consumer are cautious about their rights, in the same way they should show reflexes toward the responsibility or duties. Now what duties has the consumer? Let's see that. उसके बारे में देखते हैं. So first one, it is saying that while purchasing the commodity or a services, consumer should make correct choice. Means whatever you want, you have to purchase that. Okay, nobody can manipulate your choice. At the time of purchasing a product, consumer should purchase the product having good quality, reasonable price, guarantee or warranty after sale service. He should purchase goods having standard things like BIS, ISI or AG mark. This kind of mark we have to observe definitely. While purchasing the electric or electronic gadgets, priority should be given to the purchase of standard and branded item only. Chila chalu item खरीदने का नहीं. First. Second, at the time of purchasing a product, many product choice has to be made. While choosing the product, they should have all the information. Whatever you are going to purchase, you have the appropriate information regarding that. आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए. Okay, बिना जानकारी के प्रोडक्ट खरीदने का नहीं. As a consumer has decided and behavior should be wise, intelligence, calculative and bearing the common sense. ये बहुत important है. मार्केट जाने के बाद पागल नहीं हो जाने का भाई. सामान देख के what is your requirement, what you want, उसको ही आपको prioritize करना चाहिए. Next, it is the duty of consumer that his conduct or behavior toward the seller or the producer should be gentle and bona fide. તમે તો બધા લૂંટવા જ બેઠા છો. You are not supposed to speak like that way. You must be rational. Is it clear? That is the most important thing, which unfortunately we have not seen in our behavior. Consumer should insist on having the original bill or original receipt of item and services purchased by him. This is the most important thing, especially in the field of medicine. मैं बहुत बार ये चीज़ सबको बोलता हूँ. कुछ भी मार्केट में खरीदने जाओ और आपको लगता है कि इट इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ, प्लीज़ 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 डिमांड द बिल. अगर वो बिल नहीं दे रहा है, आप मत परचेज करो, मना कर दो उसको चक मार के बिल देना पड़ेगा. मना नहीं कर सकता वो, बराबर है. दैट इज अ थिंग. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बिल के लिए हमेशा आग्रही बनी है. यू हैव टू टेक द बिल आपको लेना चाहिए. दैट इज योर राइट. ओके, कंज्यूमर शुड कम टुगेदर एंड फॉर्म अ वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और एसोसिएशन which is non-political, non-commercial. Okay, this one also you have to keep in your mind. They should ask the representation in the different government committees released to consumer. So it also duty of the consumer that he should fight against exploitation. Next, consumer should make verbal or written complaint to the officer related to the department without fail. अगर कोई भी आपके साथ में कुछ अन्याय होता है, इमीडिएटली उसकी जानकारी आपको देनी चाहिए. वो बात अलग है कि उसके ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं होती, लेकिन आप एक बार अपनी तरफ से अपने आप को सेव कर सकते हो. कल कोई निकल कर बात आई तो आप दिखा सकते हो, बिकॉज रिटन एविडेंस होगा तो फिर अच्छे लोगों को जो है चलते बनना पड़ता है. ये एक फैक्ट है, आप मानो चाहे नहीं मानो. ठीक है. While purchasing a product, if the consumer feel
that the product is adulterated or duplicated or fake or find discreet in weight, or should immediately bring notice to the trader. And if the trader delay to bringing solution, then he should be given an application to authorities or the consumer court asking for redressal. Thus, consumer should perform his duty as a responsible citizen. Next, consumer should purchase a product in significant quality and number only. Whatever your requirement is there, according to that only you have to purchase. Next, while purchasing, weight, scale, implement of measurement, electronic instrument must be checked. बराबर है, उसने वजन बराबर रखा है कि नहीं रखा है, बराबर है, 0 पे काटा है या नहीं है. That all thing you have to see. A consumer should make sure whether the tool manufacturing have the tested and verified by the investigation officer or not. Okay. फिर most important thing, when you purchase the material like gases, LPG and all, at that time the seal of the gas cylinder should be always checked, whereafter intact or not. Taxi और रिक्शा should bonded after checking the zero. ये बहुत important है, क्योंकि आप बहुत बार बैठ जाते हैं, उनका मीटर चालू रहता है, आपसे ज़्यादा पैसा वसूल कर लेते हैं. बराबर है. Reading of the meter, we should pay the pre-rate of meter. Okay, similarly petrol, diesel, CNG should be filled after checking the indicator 000. While purchasing kerosene, one should insist of purchasing only after the form of the measuring can settle down. ऊपर झाग आ जाता है फॉर्म, वो बैठ गया था, आपको मालूम पड़ेगा रियल में कितना भरा है. ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर कॉन्शियस रहना चाहिए. कंज्यूमर शुड ईदर हिमसेल्फ to a consumer forum or should be complained through the consumer society against the negligence in the improvement of the railway, bank, insurance, telephone, hospital services for the compensation. अगर कोई ऐसी भूल करता है तो उसके ऊपर जो है तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. मैं तुमको एक बहुत मस्त एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहूँगा. अपने स्कूल में एक बार ऐसे ही जो है एक सेमिनार हुआ था बच्चों, और उस सेमिनार में जो है एक अंकल बड़ौदा से हम लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए एंड एट द सेम टाइम नॉलेज देने के लिए यहाँ पे आए थे स्कूल में. एंड 9th-10th लोगों के बच्चों के साथ में ये सेमिनार चल रहा था. तो उन्होंने एक बहुत मज़ेदार वाक़या बताया विच आई वांट टू शेयर विद यू, हाउ मच इंटरेस्टिंग इट इज़. बराबर है. पैसेंजर ट्रेन में अहमदाबाद से आनंद की टिकट 14 रुपीज़ और आनंद से अहमदाबाद की टिकट 15 रुपीज़. डिस्टेंस उतना ही है, 1 रुपये का फ़र्क है. ये बात जो है ये भाई साहब के दिमाग में आई, तो इन्होंने जो है पहले तो रेलवे वालों को ही कंसल्ट किया कि भाई ऐसा कैसा. सवाल 1 रुपये का नहीं था, सवाल जो है प्रिंसिपल का था कि भाई अगर डिस्टेंस सेम है, सेम ट्रेन है, तो जाने का क्यों 15 और आने का क्यों 14. वाई दिस डिस्क्रिमिनेशन. गवर्नमेंट के पास उसका कोई रेलवे के पास जवाब नहीं था. इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में जो है टिकट वगैरह के साथ में दावा कर दिया और ऑटोमेटिकली कंज्यूमर कोर्ट को ये डिक्लेयर किया उन लोगों ने कि आप जो है इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और ऑटोमेटिकली उनको वो 1 रुपये का जो डिफरेंस था वो वापस लेना पड़ा. दैट इज़ कॉल्ड द अवेयरनेस. ठीक है. अब जस्ट इमेजिन करो 1 रुपये से कितना जो है गवर्नमेंट को जो है कोई आपको नुकसान नहीं हो रहा था, गवर्नमेंट को कोई मल्टी फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ तो आपके हक का जा रहा था. जस्ट इमेजिन करो एक दिन का 1 रुपये भी आपके जेब से ऐसी फालतू का चला जाए तो 365 दिन का 365 रुपया जाता है. ज़्यादा नहीं तो और कुछ नहीं तो 10 दिन की तो सब्जी आएगी कि नहीं आएगी भाई. ठीक है. तो लाइक दैट वे यू हैव टू थिंक. अब ये सारी की सारी बातें हुई ड्यूटीज़ की. अब उसके बाद में अब आपको जो है कोर्ट से कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा. अगर समझो कोई मैटर अगर आपका कोर्ट में चला जाए, देन हाउ इट विल बी फाइट देयर सॉरी, वहाँ पे किस तरह से इसके ऊपर. तो इंडियन गवर्नमेंट ने 3 ट्रिब्यूनल बना रखे, 3 लेयर पे कोर्ट बना रखे. एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दूसरा स्टेट लेवल पे, तीसरा सेंट्रल लेवल पे. अगर इन तीनों में से भी कुछ मामला नहीं बनता तो भी सुप्रीम कोर्ट तो है ही है भैया. ठीक है. और इनके अंदर स्लॉट डाल दिए भाई, इतने से इतने लाख रुपए के बीच में डिस्ट्रिक्ट में जाओ, उससे ज़्यादा है तो स्टेट में जाओ, उससे ज़्यादा है तो सेंट्रल में जाओ. चलो उसके बारे में बात करते हैं. ओके. Following 4 types of measure have been undertaken the consumer protection. First, 3-tier tribunal court under National Consumer Protection Act 1986, Central Consumer Protection Council, National Consumer Commission
has been set up. Similarly, the State Consumer Forum has been set up in the state level, and under the Commission, law for the consumer protection are framed. National Consumer Dispute Commission has created the structure of 3-tier court, framed norm, action and consumer forum or commission. पहले डिस्ट्रिक्ट फॉरम में देख लेते हैं. यहाँ पे ये बोल रहा है जनरली देयर इज वन कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट. इट स्टडीड द कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर एंड गिव्स द compensation and the consumer against loss. Approximately in India 571 consumer district forum are working. Is it clear? These court presently the claim compensation up to 20 lakh बराबर 20 लाख रुपए तक का जो है ये अपना ये फैसला सुनाती है. If petitioner is not satisfied with the division कोर्ट फॉर्म, अगर यहाँ से जिसने कंप्लेन किया वो सेटिस्फाई नहीं तो आगे के कोर्ट में जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोविजन है भैया. ही मे फाइल द कंप्लेन ऑफ द स्टेट कमीशन विद इन 30 days एंड बिफोर दैट ही पे ईदर 50% अमाउंट ऑफ कंपनसेशन क्लेम और 25,000 विच एवर इज लेस. ये प्रोविजन है भाई. नेक्स्ट स्टेट कमीशन बराबर है. ऑल ओवर इंडिया में से 35 स्टेट फॉरम है. अब आप बोलोगे सर इंडिया में स्टेट तो हार्डली 28 है, ये 35 कहाँ से भी, किसी किसी में एक से ज़्यादा हो सकते हैं भाई बराबर है. दिस कोर्ट प्रेजेंटली क्लेम मोर देन 20 लाख एंड लेस देन 1 करोड़ बराबर है. यहाँ पे भी ऐसी है, अगर कोई भी पिटिशनर अगर सेटिस्फाई नहीं है और आगे जाना चाहता है तो यह उसको 30 दिन के अंदर जो है आगे के कोर्ट में एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और एट द सेम टाइम 50% ऑफ द कंपनसेशन या फिर 35,000 जो भी लेस हो वो उसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा. फिर नेशनल कमीशन बराबर, इसके अंदर 1 करोड़ और उससे ऊपर का जो है क्लेम कंपनसेशन ये किया जाता है, कंप्लेन की जाती है बराबर है. इसके जो है 5 मेंबर्स होते हैं. स्टेट कमीशन में जो है 90 डेज के अंदर कम से कम जो है चुकादा आ जाना चाहिए. इसमें जो है एक रिटायर गवर्नमेंट टीचर भी होता है बच्चों, और एक फीमेल भी होती है बराबर है. तो ये बहुत सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ने किए हुए हैं. एक सिविल सोसाइटी या कंज्यूमर सोसाइटी का मेंबर भी होता है. इफ द पर्सन डज नॉट कंप्लाई द ऑर्डर बाय द कोर्ट ही कुड गिवन द पनिशमेंट और पेनल्टी और बोथ होता है. ठीक है. अब इंडिया में कंज्यूमर सोसाइटी है बहुत सारी है, अपने गुजरात में भी है, उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं. ठीक है. कंज्यूमर सोसाइटी एज पर द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट reorganization, consumer society been have established at तालुका district, state or national level. The consumer society or the council are non-political, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉन कमर्शियल, वॉलेंटरी होनी चाहिए, अपनी इच्छा से बनाएंगे, set up by the consumer. The main objective of this consumer society is to bring awareness about the consumer right, encourage them, help government to frame the policies to protect from time to time. It keep reviewing the position of the consumer right and act. It also gives the suggestions to the government need to change the legislative position. These consumer society provide consumer education through the consumer awareness program, which provide guidance on main subject, the right of consumer, duties, exploitation in different way, and how to be saved from the exploitation. These consumer society organization publish monthly, bi-monthly magazines like ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट, अहमदाबाद से ये लॉन्च होती है, द कंज्यूमर, ग्राहक मंच एक्सेट्रा. ब्रिंग अवेयरनेस, दे हेल्पफुल टू एलिमिनेशन ऑफ द कंप्लेंट ऑफ कंज्यूमर. फिर है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज PDS, यानी रैशनिंग वगैरह जो भी है, ठीक है, उसको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि करप्शन नहीं हो. Under public distribution system, essential commodities of the goods, commodities of good quality are provided in fixed quantity and subsidized rate to the poor people at regular interval of time in fair price shop. We call the rationing shop. Thus, the poor consumer is saved from the exploitation in the open interval from the fair price shop. Thus, the poor
consumer is saved from the exploitation in the open market from where they have to purchase the goods at the high rate at low quality and less weight. फिर है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल द करप्ट प्रैक्टिसेस, ऐसे कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे जो है कंज्यूमर का नुकसान हो, दोनों के लिए ये असेंशियल है। सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर, गवर्नमेंट हैज़ टू सेट अप द इंस्टीट्यूट विच परफॉर्म द टास्क ऑफ चेकिंग द क्वालिटी क्वांटिटी। देखो इसके अंदर कौन कौन से, तो ISI और BIS है। ISI सबसे पुराना है और BSI जो है गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है इस्टेब्लिश किया। ISI 1946 में इस्टेब्लिश किया था और अभी उसको 1986 में इसका नाम बदलकर BIS कर दिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जिस पे भी ये मार्का लगा होता है वो चीज़ एकदम एक्सेलेंट होती है, भले महंगी हो लेकिन सही होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर किसी को ये मार्का देती भी नहीं है बच्चों, बराबर है। सिमिलरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एग्रो मार्क रहता है, इसी तरह से गोल्ड वगैरह के लिए होल मार्क रहता है, बराबर है। फिर वुलन और इन सब चीज़ों के लिए अलग रहता है। इसी तरह से फूड प्रोडक्ट के लिए FSI FCCI, बराबर है। इसी तरह से जो है इंटरनेशनल जो भी कमोडिटीज होती है उसमें जो है ISO मार्किंग होती है, बराबर है। अब लास्ट में हम लोग यहाँ पे अपने चैप्टर को कंक्लूड करते हैं दैट हु कैन फाइल द कंप्लेन, कौन कंप्लेन कर सकता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। कंज्यूमर हिमसेल्फ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज, कंज्यूमर सोसाइटी, कंपनी लॉ और अदर प्रोवाइडिंग लॉज, रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर ऑन द मैटर विच इज़ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर। कंज्यूमर खुद या उसके बिहाफ पर ये जितने भी लोग अभी नाम लिखे हुए लोग कोई भी जो है कंप्लेन कर सकते हैं। Any member of the family of the person who has purchased the product or services with permission may file the case। और जब भी ये करो तो उस समय कोई भी ओरिजिनल कॉपी देने की नहीं, जेरोक्स ही देने की है, खास ध्यान रखने का। If the producer or the trader neither filled solution or show the preparedness to find solution, the true, correct and clear complaint, in that case consumer to his family member may file the case in the local district forum, state commission, national commission, etc. They may complain in supply court, officer of metrology मतलब science of weight and measurement, and consumer court, consumer society, collector, इन सब लोगों को भी आप ज्ञापन दे सकते हो। कंप्लेन कैसे फाइल करोगे? Victim may file the complaint in a simple and clear language, either typing or handwritten, through email. If the victim goes to the court through lawyer, then he need affidavit. उसको ये एक बनाना पड़ेगा कि मेरे भी यहाँ पर ये लड़ रहा है क्या। Name the applicant, address, contact number should be there. Write detailed description of the complaint and give the reason for complaining clearly. Enclose copy of supportive evidence or document related to the accusations. Never give the original evidence. देखा सुना, ओरिजिनल एविडेंस देने नहीं भाई। Enclose bill, receipt of payment if the payment has been made, check that attach the counter to give the detail of check। फिर है enclose copy of conditions maintained in seller copy, advertisement, pamphlet, ये सब चीज़ें भी संभाल के रखने की। कुछ क्लिप वगैरह है तो वो भी रखने की, जिसका उन लोगों ने दावा किया है तो उसके ऊपर बराबर से कार्रवाई की जा सके। कंज्यूमर में lodge a complaint with the 2 years of emergence of reason of complaint। Any consumer may call the Gujarat State Helpline toll free number दिया हुआ देखो यहाँ पे 1800233022 और नेशनल लेवल हेल्पलाइन नंबर 1800114000 कंज्यूमर रिलेटेड। या अहमदाबाद में ICR की ऑफिस है, वहाँ पर भी आप कंप्लेन दे सकते हो, वो आपके बिहाफ पर जो है लड़ाई करेंगे। And like this way I have completed this chapter here. In next one again we will move toward history। SS के अंदर हम लोग जो है इंडिया के कल्चरल हेरिटेज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे। And here this chapter is over। Okay, bye, see you, take care।